Hello, students. Welcome you all to our third session of our chapter number 5. Students, in this session, we are going to study regarding various cellular organelles like Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids, vacuoles, etc. So, let us start our session. Students, let us start with our first topic, that is Golgi apparatus. Golgi apparatus was first described by the scientist Camillo Golgi. The name of the scientist is Camillo Golgi. He first described the Golgi apparatus. Golgi apparatus consists of a system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stack called cisterns. Students, you can see in the figure that Golgi apparatus are what? They are membrane bound vesicles. Their structures are membrane bound vesicles and you can see that they are arranged parallel to each other. एक के ऊपर एक parallelly arrange किया गया है in a stack and this is called cistern. What is it called? Cistern. What is the main function of Golgi apparatus? The materials synthesized near the endoplasmic reticulum. The materials synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. So, what is the main function of Golgi apparatus? It includes what? Storage, modification and packaging of products. ये products को store करता है, modify करता है और pack करके उसको dispatch करता है to various targets inside and outside the cells. In some cases, complex sugars may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. This is also a function of Golgi apparatus. In some cases, they form what? Complex sugar from simple sugar. And the last, not the least, that the Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. Yes, Golgi apparatus are also involved in the formation of lysosomes. So, students, here we studied about Golgi apparatus, that it was first described by Camillo Golgi. It is a system of membrane-bound vesicles. Okay, and its various functions. Now, let us study regarding lysosomes. What are lysosomes? Lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. Lysosomes are sac-like structures which has their own membrane and it is filled with what? Digestive enzymes. Lysosomes के अंदर digestive enzymes है and these digestive enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. कौन बनाता है ये digestive enzymes? Rough endoplasmic reticulum. Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. Lysosomes करते क्या है? सेल के वेस्ट को डिस्पोज कर देते हैं. Okay, these help in keeping the cell clean. Okay, they keep the cell clean by what? By digesting and what? Any foreign material as well as worn out cell organelles. कोई भी फॉरेन मटेरियल या कोई भी सेलुलर ऑर्गेनल जो वर्न आउट हो चुका हो उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं. दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सो पावरफुल दैट दे कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल. दे कैन इवन डाइजेस्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड एंटरिंग द सेल. ओके, दे कैन डाइजेस्ट ऑल दीज थिंग्स. सो lysosomes are known as what? They are the waste disposal system of the cell. But sometimes during the disturbance in the cellular metabolism, students, very important to remember, sometimes whenever there is disturbance in the cellular metabolism, जब सेल के मेटाबॉलिज्म में कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो these lysosomes get burst. ये सेल डैमेज हो जाता है और lysosomes burst हो जाते हैं. And when these lysosomes get burst, the digestive enzymes come out of the lysosomes and they digest their own cell. ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने पावरफुल होते हैं कि जैसे ये बाहर आ जाते हैं दे कैन ईट अप देयर ओन सेल एंड हेंस लाइसोसोम्स आर नोन एज व्हाट? दे आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स. व्हाट आर दे नोन एज? सुसाइड बैग्स. सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं लास्ट वाला स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ दैट ड्यूरिंग सम डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, द लाइसोसोम्स में बर्स्ट and these enzymes digest their own cell and hence lysosomes are also known as suicide bags. Now students, let us study regarding mitochondria. Mitochondria is a cellular organelle which have two membrane covering. They have double membrane covering. इनके outer covering में दो membrane होते हैं. The outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. You can see in the figure, students, can you see in the figure that the outer membrane is porous. Porous मतलब क्या? Small pores होते हैं, holes होते हैं उनके outer membrane में, and the inner membrane is deeply folded. Can you see अंदर का जो membrane एकदम folded है.
Okay, so it contains two membranes. Outer membrane is porous and the inner membrane is deeply folded, and these folds, जो inner membrane के folds है, increases the surface area for ATP generating chemical reactions. Students, what is ATP? ATP is adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate, it is the energy currency of the cell. It is the what? Energy currency of the cell. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP molecules. तो हमने क्या देखा कि जो हमारे लाइफ के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, इट इज रिलीज्ड वेयर इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एटीपी मॉलिक्यूल्स, एंड हेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज व्हाट? पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आवर लाइफ is released in the mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate. ATP is known as what? Energy currency of the cell. The body uses this energy stored in the form of ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. ये जो एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हमारी बॉडी यूज करती है फॉर वेरियस एक्टिविटीज. Now, it is very important to remember that mitochondria are strange organelles. Why they are strange organelles? Because they have their own DNA and ribosomes. Students, अभी तक हमने क्या देखा था? That DNA is only present in the nucleus. It is only present in the nucleus, है ना? That too on the chromosomes. But mitochondria possess their own DNA and they also possess their own ribosomes. Okay, and since they possess their own ribosomes, so mitochondria are able to prepare what? Their own proteins, because ribosomes prepare what? Proteins. इसके लिए mitochondria के खुद के proteins होते हैं, इनको बाहर से कहीं से लेने की जरूरत नहीं होती है. So this is our short note regarding mitochondria. Okay, students. Our next topic is plastids. Students, it is very important to note that plastids are present only in plant cells. Plastids खाली plant cell में होते हैं. They are absent in animal cells. Now, there are two types of plastids. Which are the two types of plastids? Chromoplasts and leucoplasts. Chromoplasts or leucoplasts. So, what do you mean by chromoplasts? Chromo word stands for color. Okay, the chromoplast means colored plastids. There are various types of colored plastids. They are all included in chromoplast. And what do you mean by leucoplast? Leucoplast means white wala या फिर colorless plastids. Colorless or white plastids. Okay. So which are the two types of plastids? Chromoplastid, that is colored, and leucoplastid, that is white or colorless plastid. Okay. Now let us study regarding chromoplast. So that chromoplast which contains green color pigment called chlorophyll, it is known as chloroplast. Yes student, ये जो chloroplast हम लोग पहले से बचपन से पढ़ते आते थे, that chloroplast is a type of chromoplastid. Okay, it is chromoplastid and it contains which color? Green colored pigment called what? Chlorophyll. Okay, so chloroplast, and what is the importance of this chloroplast? Chloroplast is important in what? In the photosynthesis process. Yes students, we know that green plants in the presence of sunlight prepare their own food with the help of what? Chloroplast. Okay students, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो, अभी क्लोरोप्लास्ट में तो कौन सा कलर का पिगमेंट हमने बोला? ग्रीन कलर का पिगमेंट, क्लोरोफिल. बट समटाइम्स दे ऑल्सो पोसेस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल, बट दैट आर इन द स्मॉल क्वांटिटी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ल्यूकोप्लास्ट. Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. Now leucoplast मतलब colorless plastid, but what is the function of leucoplast? They store, what do they store? Starch, oils and protein granules. Okay students, now again very important to note that the structure of plastids are what? Are similar to the structure of what? Mitochondria. Mitochondria का external structure और plastid का external structure एकदम same होते हैं. And in the similar manner, since mitochondria also possess their own DNA and ribosomes, similarly plastid also possess their own DNA and ribosomes. Student, ये बहुत important objective question रहेगा, that which two cellular organelles possess their own ribosomes and DNA? So mitochondria and plastids possess their own DNA and ribosomes. Okay students. Now students, let us proceed further to our next topic, that is vacuoles. What are vacuoles? Vacuoles are storage sacs. ये खाली bags होते हैं जो कुछ चीज़ों को store करते हैं. Vacuoles are storage sacs for liquid or solid contents. They store some liquid or solid substances. Okay. Now very important to note that vacuoles are small sized in animal cells, but they are very large sized in plant cells.
ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का जब आप डिफरेंस लिखोगे ना तो उसमें ये पॉइंट आप कवर कर सकते हो दैट इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड एंड इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर इन लार्ज साइज. ओके, इन सम ऑफ द प्लांट सेल्स, कुछ प्लांट सेल्स में तो दिस वैक्यूल्स कवर नियरली 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. In some of the plant cells, these vacuoles are so much in large size that they nearly cover 50 to 90% space area. ओके, उसका जो सेल का जो वॉल्यूम है वो कवर कर देते हैं. ओके, मतलब मैक्सिमम स्पेस जो है वैक्यूल्स कवर कर देते हैं प्लांट सेल्स में. ओके, इन द प्लांट सेल्स दीज वैक्यूल्स प्रोवाइड व्हाट, इट्स इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. व्हाट डू दे प्रोवाइड? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. मतलब सेल को थोड़ा ये कड़क रखते हैं ये अंदर से. ओके, many substances of importance in the life of plant cell are stored in vacuoles. vacuoles में बहुत सारी चीज़ें स्टोर रहती है. which are those substances? like amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. okay, ये सारी चीज़ें जो है vacuoles में क्या होती है? स्टोर रहती है. understood students? so these are what? vacuoles. now students, we have seen that each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. मतलब हर सेल का जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसका सेल मेम्ब्रेन पे और इसके अंदर के ऑर्गेनल्स पे. देयर आर मेनी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल विच परफॉर्म वेरियस functions. Thus, cell is what? It is a basic structural organization of a body. This helps the cells to perform functions like what? Respiration, obtain nutrition and the clearing of waste material or forming new proteins. है ना, सेल कितने सारे फंक्शंस करता है? रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, है ना, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, न्यू प्रोटीन्स को बनाना, ये सारी चीज़ें सेल के जो ऑर्गेनल्स है वो कर देते हैं. Thus, the cell is what? It is the fundamental structural unit of living organisms. Cell is known as what? Fundamental structural unit of living organisms. It is also known as basic functional unit of living organisms. Students, in the starting of this chapter, I have taught you that cell is what? It is the basic structural and functional unit of life. क्योंकि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है और बॉडी के सारे फंक्शंस जो है वो भी सेल परफॉर्म करता है. सो इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Now student, we are going to study regarding the last topic of our chapter, that is cell division. Okay students, in the starting of this chapter we have studied regarding cell theory. Okay, scientist Virchow stated that every new cell arises from the pre-existing cell. कोई भी न्यू सेल अलग सा पैदा नहीं होता है, वो पहले वाले सेल में से ही न्यू सेल बनता है. Okay, that is cell division. Why are the new cells formed? New cells are formed in the organisms in order to what? To grow, to replace old, dead and injured cells and to form gametes required for reproduction. हमारे बॉडी में न्यू सेल्स किसके लिए बनते हैं? फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर द रिप्लेस ऑफ व्हाट? डेड एंड इंज्योर्ड सेल्स. ओके, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन. व्हाट आर गैमेट्स? GAMETES. गैमेट्स मीन सेक्स सेल्स. ओके, they are required for reproduction. Now the process by which new cells are made is called cell division. So what is the definition of cell division? The process by which new cells are made is called cell division. There are two main types of cell division which we are going to study, that is mitosis and meiosis. Which are the two main types of cell division? Mitosis and meiosis. Okay, let us study regarding each topic separately. The first type of cell division is mitosis. Okay, the process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. Okay, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए जो सेल डिवीजन होता है ना, that is by the process of mitosis. In this process, each cell, that is mother cell, okay, जो मदर सेल होते हैं, each cell which is going to divide further, okay, उसको हम क्या बोलते हैं? मदर सेल divides to form two identical daughter cells. ओके, एक सेल में से कितने सेल बनते हैं? दो सेल बनते हैं. दिस इज प्रोसेस ऑफ व्हाट? माइटोसिस. ओके, द जो इनिशियल सेल है उसको हम बोलते हैं मदर सेल एंड द टू न्यू फॉर्म्ड सेल फ्रॉम द ओरिजिनल सेल आर नोन एज डॉटर सेल्स. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर एंड टू नोट, यू कैन सी the figure students that the daughter cells have the same number of chromosomes as the mother cells. मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स है उतने ही क्रोमोसोम्स किस में होंगे? डॉटर सेल्स में होंगे. ओके, now this process helps in what? growth and repair of tissues in organisms. so mitosis के कारण जो सेल डिवीजन होता है उससे बॉडी का ग्रोथ होता है और जो ओल्ड टिश्यूज और सेल्स होते हैं उनका रिपेयर या फिर उनको हटा के न्यू सेल्स आ जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज माइटोसिस वेयर द मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स.
Now let us continue with the other topic, that is meiosis. एक था माइटोसिस, नाउ मियोसिस. सम स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और सम टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग. ओके, हम जानते हैं कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या फिर कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स के कुछ ऑर्गन्स में, टिश्यूज में क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं. ओके, ये जो गैमेट्स होते हैं इनका फर्टिलाइजेशन होता है. वंस अगेन स्टूडेंट्स, व्हाट आर गैमेट्स? गैमेट्स आर द सेक्स सेल्स. ओके, जो सेक्स सेल्स होते हैं उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे व्हाट, दे बिकम न्यू यंग वन. ऑफस्प्रिंग मीन्स न्यू यंग वन. ओके, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड व्हाट, मियोसिस. इसमें जो सेल का डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस, जिसमें 2 स्टेप का डिवीजन होता है. हियर द डिवीजन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells. Okay, they produces what, 4 new cells. Why? How? पहले देखो, एक स्टेप में जब डिवीजन होता है, पहले स्टेप में तो 2 सेल बनते हैं, और हर 2 सेल वापस से डिवाइड होकर क्या बनता है, और 2 सेल बन जाते हैं. इस तरह से टोटल कितने सेल्स बनते हैं, 4 न्यू सेल्स. The new cells only have the half the number of chromosomes than that of the mother cell. In the meiosis process, when the cell division takes place and 4 new daughter cells are formed, the number of chromosomes in the mother cell है ना, and in the number of chromosomes in the daughter cells, तो daughter cell में कितने होते हैं, हाफ होते हैं, the number of chromosomes in the mother cell. लेकिन माइटोसिस में याद है मैंने बताया था that the number of chromosomes remains same as that of the mother cell. Okay students, so by this we have studied that there are 2 processes of cell division, that is mitosis, in which the mother cell divides to form 2 daughter cells, and then meiosis, in which the mother cell divides to form 4 daughter cells. Okay students, so students, by this we have end our chapter. Okay, we have covered all the topics of the chapter. Now when we have studied regarding all the topics, we have seen that there are some special things which are present in plant cell and absent in animal, and there are some other things which are present in animal cell but they are absent in plant cell. Okay, so how we can differentiate plants in an animal cell? It is clearly given in the pic which I have shown you. Okay, plant cell और animal cell में क्या क्या difference होते हैं ये एकदम clearly pic में दिया गया है. You have to study this difference. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिफरेंस अगर आप याद कर लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या नहीं होती है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू चैप्टर. टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स.